Hi everyone, welcome back to our channel. First of all, thank you so much for watching this video today. तो आज हम बात करने वाले हैं how to get a driving license in Ireland. Like a lot of my friends have been applying for a driving license in Ireland. तो मैंने सोचा कि why not to make a video on it. So I have researched a bit and I've jotted down some of the points which I'll take you through in this video. So please पूरा video देखना. And before starting it, I really want you to subscribe to our channel अगर आप नए हैं तो, और don't forget to click on the bell icon beside it. तो अगर मैं पूरे ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस की बात करूँ तो what I've planned to take you through with the whole process first, stepwise process, and how much time it takes, how much fee you need to put in for each of these steps, and what you need to do from your end. But other than that, I'm gonna share my experience as well, कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था जब मैंने अप्लाई किया था यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, एंड मे बी आई कैन गिव यू सम टिप्स जो मेरे केस में इट वाज माय मिस्टेक्स, बट यू कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. सो let's start. So the first step is pass a driver's theory test. So the first tip which I can give you is, जैसे आपने डिसाइड किया कि आपको लाइसेंस लेना है तो सबसे पहले आपको थ्योरी टेस्ट देना होता है. और the first step which you need to do is immediately go to DTT website, which is driver's theory test website, and book your theory test appointment. बिकॉज वहाँ पे भी बहुत लंबा वेटिंग टाइम होता है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई केस, सो मुझे ऑलमोस्ट, मैंने अप्लाई किया था, एक्चुअली मैंने अपॉइंटमेंट देखना चालू किया था मई में 2019, और मुझे थ्योरी टेस्ट की अपॉइंटमेंट मिली थी जुलाई में. सो बिफोर प्रिपेयरिंग, book your test and start your preparation after booking your test. Prepare करने के लिए there are first of all, when you book your test you will get a book to prepare. तो उसमें सारे questions होंगे, क्या क्या वो पूछते हैं, वो सब कुछ होगा उसमें. And second of all, sometimes लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है बुक पढ़ने में, तो बेटर मैंने क्या किया था, there is a site, it's called Theory Tester. तो वो साइट पे ऑलमोस्ट 900 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. उसमें आप टाइमर लगा के मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, एंड इट्स एक्चुअली ईजी टू डू इट बिकॉज द फॉर्मेट इज़ इन द सिमिलर वे जैसे एक्चुअल टेस्ट में आता है. तो सेम फॉर्मेट होता है, 4 ऑप्शंस और एक क्वेश्चन. सो इट इज़ एक्चुअली ईजी टू प्रिपेयर योर सेल्व्स. The one thing which I forget to mention, which is when you book your test, theory test, it will ask you about the category type, कि आप कौन सी कैटेगरी का आपने टेस्ट बुक किया है. सो अभी आप देख सकते हो, देयर लाइक 5 kinds of category which it's showing. BW, which is for car and work vehicles, AM, which is for motorcycle, C for truck, D category is for bus, and so on. And even the fee varies from category to category. So अगर आप कार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो you need to select BW category, and the fee for that is 45 euros. Another tip which I want to give you is, जब आप theory test के लिए जाते हो तो they look for certain ID requirements. So when you book your test, don't forget to check the ID requirements based on your nationality. So that is one thing which I want to mention. And that's it. तैयारी करो and then go for your theory test. ऑल टुगेदर 40 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 35 आंसर करने होते हैं. व्हेन आई गेव माई टेस्ट आई स्कोर्ड 38 out of 40. सो नॉट टू बैड. जस्ट गो फॉर योर टेस्ट, पास योर टेस्ट एंड गेट योर पासिंग सर्टिफिकेट. नाउ once you get your theory test passing certificate, you need to apply for your learner's permit. For applying for learner's permit, you need 2 things. One, you need to book your NDLS appointment. But before booking your NDLS appointment, you need to have few reports along with you. One is your passing certificate. Second is your driver's eye test. So you need a driver's eye test done from any of your nearest optician. Like in my case, I went to Specsavers.
सो स्पेक सेवर्स के लिए आपको उनकी साइट पे जाना है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है। जब आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करोगे, द रीज़न यू नीड टू गिव इज़ ड्राइवर्स रिपोर्ट। सो दे विल गेट टू नो अच्छा आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आ रहे हो। द फी फॉर दैट इज़ 15 to 20 euros. After getting your driver's eye test report and your passing certificate, as mentioned earlier, you need to book your appointment in the NDLS office. So आजकल उन्होंने कंपलसरी अपॉइंटमेंट कर दिया, बट जब मैंने अप्लाई किया था तब इट वाज अ वॉक इन। सो आप डायरेक्टली वॉक इन कर सकते हो, पर ड्यू टू करेंट टाइम्स यू नीड टेक एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम द वेबसाइट। NDLS की वेबसाइट पे जाओ एंड अपॉइंटमेंट बुक करो for a learner's permit, and then go to the office. When you go to the office, there'll be a form which you need to fill. That will be a learner's permit form which you need to fill. So when you take appointment on the NDLS website, it will tell you what all documentation you need to carry. So basically it will contain your PPSN card, your driver's eye test report, your theory test passing certificate, and 2 photographs. And for a safer side, carry your passport, GNIB, everything along with it. So it's better to carry all the documentations. So don't forget, like when you book the appointment, don't forget to see the checklist, like what all documentation they might look for. The fee for getting a learner's permit is 35 euros, along with the documentation and everything. Take your debit card as well, because you need to pay 35 euros on the counter. So moving on, there's a step 4 which is only for people जिनके पास ऑलरेडी एक फुल ड्राइविंग लाइसेंस है, फुल फॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस है। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे NDLS में जाओगे लर्नर्स परमिट के लिए, व्हेन यू फिल दैट फॉर्म देयर विल बी अ क्वेश्चन विच दे विल आस्क कि डू यू ऑलरेडी होल्ड अ फॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आपके इफ़ यू एक्चुअली होल्ड वन, देन टिक दैट, say it as yes, because then you will get eligible for an exemption, which I'll tell you in this step, which is step 4. So this step is only for people जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है। सो जनवरी 21 जनवरी 2019 से RSA ने ये एक शॉर्टर EDT प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, एंड इट इज़ ओनली फॉर फॉरेन लाइसेंस होल्डर्स जिनकी कंट्री का आइलैंड से कोई भी एक्सचेंज अग्रीमेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, तो इंडियन लाइसेंस होल्डर्स को ये रूल फॉलो करना होता था 21 जनवरी 2019 से पहले, कि they have to, first of all they need to wait for 6 months to apply for the final driving test, and they need to get 12 essential driving ट्रेनिंग लेसन्स। सो 12 EDT लेसन्स कंपलसरी थे, बट 2019 के बाद फ्रॉम 12 EDT लेसन्स इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 6 EDT लेसन्स। सो आपको सिर्फ 6 लेसन लेने हैं अपने इंस्ट्रक्टर से, और द 6 month रूल वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा कि यू डोंट हैव टू वेट फॉर 6 months बिफोर यू अप्लाई फॉर द फाइनल ड्राइविंग टेस्ट। तो आप इमीडिएटली 6 लेसन लो एंड यू कैन इमीडिएटली अप्लाई फॉर योर ड्राइविंग टेस्ट, यू डोंट हैव टू वेट फॉर 6 months. सो दिस वॉज समथिंग विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। जनरली लोगों को ये पता नहीं होता एग्जामिनेशन से के बारे में, इवन आई वॉजेंट अवेयर ऑफ। जब मैं NDLS के ऑफिस गई थी लर्नर्स परमिट के लिए, दैट टाइम आई टिक्ड दैट क्वेश्चन, आई सेड येस ऑन दैट क्वेश्चन, एंड देन एट द काउंटर दैट गाय टोल्ड मी कि अच्छा आपके पास ऑलरेडी एक लाइसेंस है, you are actually eligible for this exemption. And then he gave me a number to call on, and when I called on that number I got to know about this whole process. So I thought to include this step as well when I tell everyone about the driving license thing. So what you need to do, you need to go again on RSA website. There'll be an option available saying exemption. When you go inside that, there'll be a form. I'll show you. So that's the form. It says foreign license holders application. You need to fill this form,
and you need to have 3 documentations. One is your foreign driving license. तो आपको अपना original license उनको courier करना होता है, along with a letter of entitlement. The letter of entitlement, this is something which I'm telling only for Indian license holders. Yeah, it's called परिवहन सेवा. So आप यहाँ पे जाओ, अपनी details डालो, or you can able to generate a letter of entitlement for yourself. So in my case, I actually wasn't aware of this website कि ऐसा कोई website है जहाँ पे जाके मैं अपना letter of entitlement apply कर सकती हूँ. So there was a whole lot of hassle which I've gone through in getting this letter of entitlement. बट आप ये वेबसाइट से ये लेटर निकाल सकते हैं, एंड इट्स एक्चुअली अवेलेबल इन इंग्लिश. हाउएवर अगर इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में आता है, तो यू नीड टू put in a certified translation document as well along with your LOE. So if you want to get a translated copy of your LOE, then you need to get it by a professional member of the Irish Translators Association from this, and the website name is www.translatorsassociation.ie. So it's coming down below, you can see it. So ये website पे जाके आपको अपना translated certificate लेना होगा. So once you get these 3 documentation which is there in the form, that foreign driving license, letter of entitlement, and along with a certified translation if you require it, and that's it. You need to send it to this address which is in Cork. It's mentioned on the form as well. And yeah, I think it takes 15 days, you will get your exemption letter. Next step is to find RSA approved driving school. This was a mistake which I did. I wasn't aware that time that your instructor needs to be RSA approved. I got to know somehow later on, but the instructor which I had, it was a horrible experience, which I'll tell later. But this is the next step, which is to find RSA approved driving school. This step is actually for all the people, whether you hold a driving license or अगर आप नए हो तो ये दोनों के लिए है. The only difference is the EDD lesson, the lesson requirement. So अगर आप नए driver हो तो you need to take 12 EDD lessons, along with you need to wait for 6 months. अगर you already hold a license, a foreign driving license, then you just need to take 6 EDD lessons and you don't have to wait for 6 months. So at this stage, when you find a driving school for yourself, the price for that goes, it actually varies depending on which place you are applying, or in which county you are. So I can tell you in my experience, like in Cavan, I paid 30 per lesson. So I've paid 30 euros per lesson. And I've taken, although the requirement was 6, but I've taken 9 lessons because मुझे और practice करनी थी. If I tell you the average, so 30 to 40 euros जाता है average per lesson. तो अगर आप, and sometimes जो driving schools होते हैं, they have deals, they have discount options as well. Like अगर आप 12 lessons एक साथ पे कर रहे हो, एक साथ ले रहे हो, तो you'll get a deal like 30 में ही आपको 12 lessons मिल जाएंगे. And then they have deal for 6 EDT lessons as well. After this exemption came, so they have deals for 6 EDT as well now. Now, once you get your lessons done, just ask your instructor. So if your instructor says कि yes, you are fully ready now, go book your test, then go for it. अगर वो बोले कि नहीं अभी तुम ready नहीं हो, you need to take more lessons or so, then don't book it, because जब आप book करते हो you need to pay again a fee to book your final test. Why you want to waste that thing? And again there's a waiting period as well कि अगर आप first attempt में pass नहीं होते तो आपको दोबारा अप्लाई करना होगा अपॉइंटमेंट के लिए. अगेन देयर इज़ अ वेटिंग टाइम. सो रादर
आप अपने इंस्ट्रक्टर से बात करो, उससे पूछो इफ़ यू आर फुली रेडी और नॉट. अगर आप रेडी हो देन गो फॉर बुकिंग अ टेस्ट. जनरली लोग क्या करते हैं कि जो लोग जिनको सिर्फ 6 ईडीटी लेसन्स चाहिए, जैसे मैंने भी ये किया था. मेरे जैसे ही 6 लेसन्स पूरे हो गए थे, मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी, क्योंकि अगेन देयर इज़ अ वेटिंग टाइम, एंड द टाइम आई बुकड इट देयर वाज अ वेटिंग पीरियड ऑफ 6 वीक्स. तो मैंने आज बुक की थी अपॉइंटमेंट, एंड मुझे 6 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट मिली थी. तो आई न्यू लाइक मेरे पास 6 हफ्ते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए और तैयारी करने के लिए. So it's better ask your instructor first and then book your test accordingly. And also the car hire fee. सो जब आप ई डी लेसन्स बुक करते हो, जैसे मैंने बताया कि डील्स होती हैं, तो आपको 12 लेसन्स की या 6 लेसन्स की डील्स मिल जाएंगी. उसमें कार हायर भी इंक्लूडेड होता है, जिसका एवरेज जाता है 80 to 120 euros, अगेन डिपेंडिंग ऑन विच लोकेशन यू आर, और आप डबलिन में हो या आप किसी और काउंटी में हो. If I talk about my experience, I actually got a car hire in 60. सो 80 भी ज़्यादा हो गया, मुझे 60 में ही मिल गया था. बट ऑन द कॉन्ट्री भौमिक को कार हायर का ऑप्शन मिला था 120 euros में. तो he had to pay 120 euros to his instructor that time. And but the good thing was कि his instructor included 30 minutes of practice time as well. So आप जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है, he'll come half an hour early, आप प्रैक्टिस करो half an hour and then you go for your test. So that was something just keep in mind while you book your lessons. अगर आप deals ले रहे हो, so don't forget to ask about the car hire thing as well, because I would say जिस गाड़ी पे आपने प्रैक्टिस की है उसी पे ही आप टेस्ट दो, because then you are actually familiar with all the functions and everything in the car. So that would be an add-on thing for you. Now the next step is to book your final test. Again go to RSA website. अगर आपको कुछ भी गाइडलाइन चाहिए या आपको कोई भी प्रोसेस नहीं समझ आ रहा है, बेस्ट थिंग इज़ टू गो टू RSA website instead of talking to people. Go to the website and follow the process. So the fee for booking a test is 85. So you need to pay 85 euros. So that's the thing I was saying, कि better to pass the test in first attempt, because then again you need to book it, there'll be a waiting time and you need to pay the fee again. There's one more thing which I want to add. When you go on to RSA website अपना final test book करने के लिए, it will, so there'll be like 2 options available. One, either it will show you dates कि ऑलरेडी वो डेट शो कर रहा होगा कि ये टाइम पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो. और इट विल नॉट शो यू द डेट्स, इंस्टेड इट विल गिव यू एन ऑप्शन कि वेन एवर अ डे विल बी अवेलेबल you'll get a call from RSA people. सो मेरे केस में एक्चुअली दोनों हुए थे, क्योंकि सो आई एक्चुअली क्लियर्ड माई टेस्ट इन द सेकेंड अटैम्प्ट. तो जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था एंड द टाइम आई बुक्ड my appointment for the first attempt, tab I got this option that RSA people will give me a call later once I book the once I pay the appointment fee. But जब मैंने second attempt दिया था तब मुझे dates के options आए थे उसमें. So these are the 2 cases which might happen when you go to that option of selecting a day and time for your test. Yeah, another thing which I want to add is once you select, like before booking your date and time, just don't forget to ask your instructor if the same car is available or not. The same car in which you have practiced is available or not. So दोनों केसेस में अगर आपको डेट्स मिल रही हैं उसमें, तो जस्ट कॉल योर इंस्ट्रक्टर एंड आस्क कि मुझे ये डेट्स मिल रही हैं, वो गाड़ी अवेलेबल होगी या नहीं होगी. और अगर आपको वो कॉल करके बताएंगे कि RSA वाले बोले नहीं, हम कॉल करके आपको बताएंगे जब भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगी, तो भी लाइक जैसे मैंने अपने केस में बताया, इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट when I actually got a call from RSA people asking me like this day is available at this time, is it suitable for you? So they will ask you, is it suitable for you?
So just tell them that you will be taking your instructor's car, so you need to coordinate with your instructor and ask him if the car which you are looking for is available or not. So I told the RSA people the same thing. I need to call my instructor and confirm this thing, and then I'll give you a call back. So they were like, okay, just give a call back on the same number and let us know. So I like, okay. So मैंने तुरंत अपने इंस्ट्रक्टर को कॉल किया. मैंने उससे पूछा कि I got a call from RSA people. Is the car available? So my instructor said yes, available है और book कर दो. So I booked it. So similarly, you need to also follow the same practice before booking your appointment. जस्ट कंफर्म विद योर इंस्ट्रक्टर कि वो दिन पे वो सेम गाड़ी अवेलेबल होगी या नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हुई थी कि जिस गाड़ी पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी लास्ट मिनट पे मेरे इंस्ट्रक्टर ने वो गाड़ी अवेलेबल ही नहीं थी. उसने मुझे बोला था कि अवेलेबल है, बट एक्चुअल में जब मैं टेस्ट देने पहुंची वहाँ पे दैट वाज इन द सेम कार. तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी एंड दैट वाज द रीज़न आई वाज़न्ट एबल टू clear my test in the first attempt because I got so cautious कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, and I got really nervous. तो मैं पहले ही फेल हो गई थी. तो इसलिए don't forget to ask your instructor that you want the same car. So now the final step, not really final, but yeah, we are nearly there. So now the next step is to pass your test. The best tip which I can give is to follow what your instructor says. So अपना दिमाग मत चलाओ, जो वो बोले वैसे वैसे करो, and that's it, and you'll pass the test. So once you pass the test, the last and final step is again to go to the NDLS office and apply for your full permit. And again, to do that, the same process which you have followed for learner's permit, you need to follow the same. Earlier there was a walk-in, now you need to book an appointment. So go to NDLS website, वहाँ पे आप अपना appointment लो, and then go to the office. There'll be a form, you need to fill that form and give your passing certificate, and that's it. You need to pay 35 euros again, and that's it. And you will get your final driving license. That's actually the whole process, 8-step process. Although अगर आप Google भी करते हो तो you won't get everything in so much detail कि क्या क्या steps होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं. तो I've tried my best to share my experience and make a kind of a flow to help you guys कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता चले कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं. नाउ अगर मैं बात करूं कि कितना टाइम लगता है ये पूरा प्रोसेस होने में और कितना टाइम लगता है from the start, from the day when you actually apply for your theory test and from the day till the day जब आपके पास final license आ जाए अपना. तो based on my experience, I actually started this whole process in May 2019 and I got my license in October 2019. So and again like it varies, although मेरा सितंबर में ही हो जाता, बट क्योंकि मैंने सेकेंड अटैम्प्ट भी दिया था एंड आई वाज लकी इनफ कि मैंने सितंबर में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया एंड देन इमीडिएटली आई गॉट द अपॉइंटमेंट फॉर माय नेक्स्ट अटैम्प्ट एज वेल. सो आई वाज लकी इनफ कि मुझे बहुत वेट नहीं करना पड़ा. पर many times, like if I talk about current times, like there'll be a waiting period of 10 to 12 weeks on an average. So again, like depending on which county you are. अभी तो theory test में भी बहुत लंबा waiting है. तो but if I talk about simpler times, then it takes at least 7 to 8 months. But the problem which happened in my case was I actually wasn't aware of this whole process earlier. अगर मुझे पता होता तो I would have applied for it way before when I was actually a student, studying in Dublin. ताकि जब मैं एक्चुअली जॉब करना चालू हुई थी तो मेरे पास मेरा फुल लाइसेंस होता. सो दैट वाज द मिस्टेक विच आई डिड.
because generally in big towns like Dublin you really don't need a driving license because आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती है. The transportation is really good over there. But places like Cavan or Baki counties, you really have to have a driving license. Otherwise, it would be a really big problem for you. So, so yeah, that was the thing which I wasn't aware कि 7-8 महीने लग जाते हैं. अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही अप्लाई कर देती. And if I talk about money wise, so I've actually created a proper flow chart, and how much costing it involves. So on an average, अगर आप foreign license holder हो and you just need to take 6 EDD lessons, then on an average सारी fees मिला के, if you clear your test in first attempt, then the costing would be 450 for 12 EDD lessons. If you clear your test again, on first attempt, then it will be nearly 700 to 800, 700 to 750. Yeah. So that's it for today, and I hope it might be helpful for you for now to apply for a test कि क्या क्या steps होते हैं, कहाँ जाना है, कितना fee लगता है, क्या exemptions होते हैं, yeah, how you can even look for your instructors, how much you need to pay, and etc. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, and अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना, and I'll try to find out more topics like these. And if you have any comments or if you want to know about anything specific, please do comment in the comment box below. Thank you. Bye.